StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जिद, समर्पण, मेहनत, निरंतरता और परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता, ऐसी क्षमता जो दूसरों के लिए मुमकिन ही ना हो, ऐसे लोग बनते हैं सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स। क्योंकि यूपीएससी दुनिया की सबसे कठिनतम अप्रत्याशित परीक्षा है, जिसका पाठ्यक्रम इतना विशाल है मानो इसमें सौरमंडल की हर एक चीज समाहित है। इस परीक्षा की तैयारी करना मानो जैसे पहाड़ से भी ज्यादा चढ़ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हौसले आसमान से भी ज्यादा ऊंचे हैं और जिनका धैर्य सागर से भी ज्यादा गहरा है। और इसीलिए ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि आपने मात्र इस परीक्षा में ही सफलता हासिल नहीं की है, बल्कि अपने जीवन के उस कठिन समय के बीच धैर्य को बनाए रखने में भी आपने खुद से खुद को जीता है। क्योंकि सिविल सेवा में सफलता हासिल करने के लिए न केवल कड़ी मेहनत बल्कि कारगर रणनीति, ईमानदारी, समर्पण और स्मार्टनेस की जरूरत होती है। ऐसे सुपर ब्रेन्स का चयन करने के लिए यूपीएससी 3 चरणों में परीक्षा लेता है और इन चरणों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले का ही अंतिम रूप से चयन होता है। आज हमारे बीच ऐसे ही कुछ हस्तियां मौजूद हैं जिनके हौसले, धैर्य और समर्पण को सलाम करने के लिए ही हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए इन हस्तियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी है और आज मैं आपकी सूत्रधार रहूंगी। आप सभी चयनित अधिकारियों और हम सभी के लिए ये गौरव और अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी आजादी के अमृत महोत्सव अमृतकाल के अधिकारी होंगे। इस परीक्षा में चयन न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान और करियर की नवीनतम ऊंचाइयों को प्राप्त कराएगा, बल्कि अमृतकाल के भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरी करने की जिम्मेदारी भी आप ही के कंधों पर होगी। और आज का ये सम्मान समारोह आपके सपनों के साकार होने और आने वाली जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं देने और आप सभी से रूबरू होकर आपकी तैयारी की यात्रा और आपके माता पिता, परिवारजनों के साथ यादगार पलों को साझा करने की स्टडी आईक्यू के परिवार की एक छोटी सी कोशिश है। Indeed, Shilpi. Namaskar, good morning, and welcome to the first ever felicitation ceremony being organized by StudyIQ for its civil service examination toppers. First up, can we have a huge round of applause for our toppers, our guests of honor who have taken time out of their busy schedule to be present here today. Excellence even in our nascency, that has been
the motivating mantra here at StudyIQ, and the presence of all of you, my dear audience, will serve to act as tailwind as we strive ahead in our motto of making UPSC preparation affordable and accessible to every aspirant. As we prepare to begin this special ceremony, may I inform you that we have been joined by special individuals who have a huge range of expertise and experience and have contributed in an immense manner to the story of India. Can we put together our hands once again for our guests of honor, our chief guests this morning? We have been joined by our chief guest this morning, Adarniya Shri Anil Swaroopji, a retired Indian Administrative Service Officer of the 1981 batch. He retired as the Coal Secretary of India, close to 4 decades in the service of the nation. A celebrated author, his 2 books, Ethical Dilemma of a Civil Servant, and Not Just a Civil Servant, are primary texts for any student aspiring to clear this examination. Can I invite Shri Anil Swaroopji to please come on the stage, as well as Shri Amrit Upadhyay sir to kindly felicitate our chief guest this morning, Shri Anil Swaroop. Thank you, Mr. Anil Swaroop sir. May I now invite our panel of experts, our guests of honor this morning, starting with Shri S. Nagpal, a distinguished individual whose career in public service has been marked by remarkable achievements. As an officer of the Indian Defence Estate Service, Shri Nagpal has made significant contributions to administration, land management, public health, education, and his expertise and dedication have played a vital role in driving progress and prosperity. May I please invite Shri S. Nagpal along with Srimati Nagpal to please join us on the main dais here, and I would request Shri Amrit Upadhyay sir to kindly felicitate Shri S. Nagpal and Srimati Nagpal, please. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are also graced by the presence of an individual who has had the good fortune, the opportunity to don both the uniform of the Indian Army as well as the Indian Police Service. We have been joined by Shri S. Prakash, who is an amazing person. If you read about him, a former Indian Police Service officer. He was with the Indian Army, a distinguished career once again in public service. May I please request Shri S. Prakash sir to please join us on the main dais. Thank you, sir. And finally, we are joined by a third eminent guest of honor this morning, Shri K.P. Shashidharan sir, an alumnus of the illustrious London School of Economics and a member of the Indian Audit and Account Service. His story is also of an unparalleled career, which has been devoted purely to the growth of the nation. May I please request Shri K.P. Shashidharan sir to kindly join us on the stage, please.
Thank you, Anil Swaroop sir. Thank you, S. Nagpal sir, ma'am. Thank you, S. Prakash sir, and thank you, KP Shashidharan sir. And finally, not to forget that we have amongst us our illustrious students who have successfully climbed the Himalayan adventure that is UPSC preparations, UPSC examinations. May we again have a round of applause for them for taking time out of their busy schedules to join us here this morning. To the toppers, well, we extend our heartfelt congratulations on your remarkable achievement. Your success is not just a personal triumph, it is an inspiration to countless others who aspire to follow in your footsteps. Your accomplishments serve as a reminder that success is never handed over, but rather earned through unwavering dedication and a steadfast belief in oneself. At this moment, my dear audience, I would also like to mention very briefly the history and the story of StudyIQ. What started out as a modest YouTube channel 8 years ago, well, now that has transformed itself into a major player, probably the first one-stop solution, one-stop destination for any UPSC aspirant. The initial struggle, ladies and gentlemen, was difficult as it always is. StudyIQ took 18 months to gain its first million subscribers. A no small feat in itself, considering that digital penetration in that time was not as what it is now. And ladies and gentlemen, I am absolutely happy and privileged to share with you that now the StudyIQ family is on the cusp of 15 million subscribers on YouTube. It's a first for any organization in the field of mentoring UPSC aspirants. Just last year, again, I'm happy to inform you that StudyIQ registered more than 100 crore views on our videos serving students not just from India but also abroad. May we again have a huge round of applause for all those involved behind this achievement. But the numbers again, my dear audience, however impressive, do not accurately capture the full spectrum of StudyIQ's mission. StudyIQ's mission has been to serve countless candidates, their innumerable dreams with unwavering zeal and passion, all to make sure that we serve India better and serve India's people better. And we at StudyIQ are proud to be enablers of this mission, first through our highly popular pen drive course and now through our even more popular YouTube channel. Once again, can we have a huge round of applause for the entire team, management and staff of StudyIQ IAS. The mission though has always remained constant: make quality UPSC preparation accessible and affordable for all students, a commitment, a resolve we all stand by and wake up to each and every morning. And it all began why? Because the founders of StudyIQ, Gaurav Garg, Abhishek Jain and Mohit Jindal, dared to dream. Just like our civil service examination toppers here. Once again, as we celebrate the achievements of our toppers this morning, it would be most apt to express our profound gratitude to not just the toppers but also their families, their mentors and their loved ones who provided the foundation for this success. May we have a round of applause for the families of the aspirants, now officers of the successful UPSC 2022 results. Thereafter, now we invite all our chief guests, all our guests of honor and Shri Amrit Upadhyay on the stage for the lighting of the lamp. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देश के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आप और हम यूं ही सुशासन के संकल्प को साकार करते रहे, इसे नित नए आयाम देते रहे और इसका लाभ समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक पूरी निष्ठा और राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के संकल्प के साथ भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका और समर्पित भूमिका निष्ठा के साथ हम यहाँ पर दें।
यही हम सबका संकल्प है दीप प्रज्वलन के माध्यम से। Thank you, ma'ams. Thank you, sirs. Lighting a lamp is symbolic of dispelling darkness and ignorance and embracing knowledge. It represents the triumph of light over darkness, wisdom over ignorance, and the removal of obstacles. Once again, thank you to our chief guest and our expert panel for coming on the stage and getting this program underway. Now, before we go forward, may I please invite on stage Shri Anil Swaroopji to share his experiences and enlighten us with his profound wisdom this morning. Shri Anil Swaroop, sir. My young friends and not so young friends. I leave you to decide, because I find very young people sitting on the first row as well. So I thought I should address them as well. What a pleasure it is to be amidst young civil servants looking ahead. Though, as you join the civil service, all I can say is, मुख्तसर सी जिंदगी के अजब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं. That's going to be your future. But I'm sure you can do that. Because you started your journey well with StudyIQ. I must confess to you that as a former civil servant, I was approached by I don't know how many institutes who wanted me to be with them for guiding civil aspirants to civil service. But I chose StudyIQ for a very good reason. And the reason was very simple, that these are very simple people, offering things simply and enabling you to become a civil servant in a very simple manner. I enjoyed my interaction with those that are working with StudyIQ. Not all of them are here. I can see some of them sitting here. But I think I enjoyed my interaction, the initial interaction with them. And then I thought something which I was doing earlier in my individual capacity post-retirement. For guiding civil servants, I thought I should join an institution to do that. It will make my life easier, because many of you would not know the amount of groundwork that is required to guide aspiring civil servants. Maybe at some point in time you'll join in to guide the future civil servants, something which I did. I started this post 2018 after my retirement. And what I used to do was that I used to rope in those that were guided by me earlier to guide those that were aspiring to civil service, and continue to do that. But there is another reason why I continue to engage with youngsters who aspire to become civil servants. One, of course, is that during my career as a civil servant of 38 years, I enjoyed every moment of my existence as a civil servant, every moment of it. And when I recall that journey, I am thrilled. I still get goosebumps when I recall some of the moments that I spent as a civil servant. And though I became an IAS officer because my dad wanted me to become an IAS officer, I made his dream into my dream. I write at the end of my first book, Not Just a Civil Servant, that if I were to be born again, I'd like to be an IAS officer all over. Because I can't think of any other service or other profession anywhere in the world. And that is not merely true of the IAS, it's true of all the civil services, that you can do so much, as you will gradually discover, as is not available anywhere else. So you can influence minds and actions of people around you, both good and bad. And when someone did ask me that, why do you want to become an IAS officer all over? I said, which service in the world allows you to be honest, allows you to be dishonest, allows you to be efficient? You can flourish. You can do well if you're efficient. You can flourish and do well if you're inefficient. And I jokingly tell people that which service in the world will allow you to reach the top position so easily as it does in various civil service. So you are now in a slot, but you can make a difference. You will find that there are officers who are spoken about. There are officers who are forgotten, even while in service. They are forgotten after service, all right. But here is an opportunity for you to bring about a change. Change in not anybody else. Change in yourself. I very soon discovered in my career that it wasn't much that I could do to others. But this service gave me an ample opportunity to do a lot to myself.
And if you can do that change to yourself, you will be able to change others. You know, the old man said, be the change you wish to see in the world. You all will gradually discover that you can't do much to others, but you will have ample scope to change yourself and to do good to the world around you. What has happened, the journey that you've traversed, the hard work that you put in, should ultimately lead you to start a fresh journey which you are starting now. That journey is over, you start a new journey. And you can contribute enormously to the good of the people around you, wherever you are, whichever service you are, whether you're in audit and accounts, whether you are in police service, whether you're in the revenue service, whichever service, enormous amount to contribute. Now, the choice is yours, and that's a phenomenal thing that civil services offer. You have a choice. You know, a man on the street, a man who's struggling to earn his daily wages, you expect a different conduct from him, it's wrong. But you are in a secure environment now, pretty secure. And I say that with all the conviction at my command. Because very often I find a lot of many civil servants blaming the set of circumstances in which they are working for not doing anything. उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा. You can do that as well. You can continue to blame the circumstances for your failures, but you must learn from your success. You succeeded. There are many like you, and since I interact with a lot of aspirants who keep blaming somebody else, and I must give an instance from my own life. I was a student of Allahabad University and I used to live in a hostel called Muir Hostel. It's right in the center of a marketplace, Katra. And there used to be blaring loudspeakers going all over the place throughout day and night, marriages, this function, that function. And in that glare and all that nonsense that was going around, you know, in our hostel, every year we used to churn out IAS officers and other civil servants. So one aspirant who got very upset with this noise went to the local thana and complained and said कि ये इतना आवाज हो रही है, हम पढ़ें कैसे? तो उसने कहा साहब इसी आवाज में आप जैसे कितने लोग IAS IPS बन जाते हैं, आप भी जाके पढ़िए. आवाज को आप नहीं बंद कर सकते, अपने आप को सुधारिए. So friends, you embark on a very interesting journey. It's a very interesting journey. You can actually make a mess of it. You can actually feel totally miserable about it, or you could love it. And so I write in my book that if I were to be born again, I like to be an IAS officer all over. Because I thoroughly enjoyed it. And my friends, if you do your job well in your service, post-retirement, it's even better. And I can say that now. I thought the service was the tops. Now I'm at the top of that, enjoying it thoroughly. So it's going to be very interesting next few years for you. I can assure you will be made or unmade in next 4-5 years. Because your reputation will then travel. So be careful about it. There are many attractions and distractions you will face now as compared to the attractions and distractions that we faced when I joined the service. There weren't so many attractions around because television had just arrived. There was not so much advertisement. Your Padosi was not as rich as he might be now because your Padosi is very responsible for a lot that happens to you. You know, I've often wondered why people buy Mercedes car in India. Because I rarely find any person who owns a Mercedes car driving it himself. I don't know, you would have seen it, but most of them have chauffeurs. And the best bit of a Mercedes is driving it. No one drives it. He sits in the back seat, which actually someone told me was meant for the dogs of the owners, for them to sit there so that they can sit and drive. So most of the people who own Mercedes sit on the back side, which is, I've sat in a number of Mercedes and I find them very uncomfortable. So I used to wonder, why do they buy Mercedes then? पड़ोसी के लिए. So अगर आप पड़ोसी के लिए पड़ोसी को देखकर अपना को बनाना चाहेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे. A lot of civil servants I see have fallen to this trap. Again, the choice is yours. A lot of them are doing very well, make name for themselves. The choice is before you to do good to the people around you and to do to yourself. And there again is a choice whether what you think is the right and wrong. No one else will tell you. These days I've seen many officers get away with it. And they think, hum to theek hai, chal raha hai, koi kar nahi raha. But you must also be aware that I come from the state of UP where 2 chief secretaries went behind the bars for corruption. So be careful. Be very careful about what you're doing. You live in a glass house now because the public is very well informed. They know it.
And then, of course, I keep telling my youngsters when I go to the academy, I used to very regularly go to the academy to talk to the probationers, the officer training, and I used to tell them, भैया social media को जरा ध्यान से इस्तेमाल करना. It's a double-edged weapon. Don't try and become famous through social media. Let your actions speak for themselves. So, my friends, you have a very interesting journey ahead of you. I would like to compliment StudyIQ for having taken this plunge into guiding aspirants to become civil servants, and the success rate is phenomenal. It's because of the effort put in by Furkan and his team, an amazing, amazing individual. Furkan, I'm really sold out to that gentleman. He works so hard. I mean, I don't know when he sleeps. And many of you would have read his messages, did you? He keeps messaging, even now he keeps messaging. So do I, but I have nothing else to do, so I do that. But you will find so many people doing that. But Furkan is a person apart, his team, absolutely amazing team. Do keep in touch with us if you can. And I had suggested to Furkan that there should be a WhatsApp group of those that have qualified during this year, 2000 batch of 2023. Let they keep interacting, because I do feel that you can learn from each other. You can still learn. Your learning has actually begun now. You should learn from each other. There's so much to learn from each other. You don't have to go elsewhere. So much experience to be shared. Many of you will. How many of you are going to go to the academy, and how many of you are appearing? How many of? Can you raise your hands? Who are going to LBSNA now? Oh, quite a few of you. So I'm sure you're going to enjoy your existence. It's one of the finest places. You know, those 3 months, the first 3 months were the best of my lifetime. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल मजा कीजिए, खूब मजा कीजिएगा. हमने खूब मजा किया. जब मजा जो भी करिए बिल्कुल दिल लगा के कीजिए. मजा पढ़ाई कीजिए, पढ़ा के मजा आपने किया ही, पढ़ाई दिल लगा के, मजा कीजिए दिल लगा के, उसके बाद काम कीजिए दिल लगा के. Ultimately what matters is whether you are enjoying the moments that you are in. And I'm sure you all are going to enjoy your moments. Do keep in touch with me. I'll be available to any one of you. You can message me. I have this bad habit of responding to messages, though I also have a bad habit of feeling bad if people don't respond to my messages. Some of you don't do that. Some of you do that. Be responsive. You know, even as Secretary Government of India, when we were supposed to be very busy, I guaranteed everyone a response within 24 hours. I could do that as Secretary Government of India, and I had 4 years tenure as Secretary, and holding assignments like Coal Secretary where everything was going haywire. I did still respond to every message. So responsiveness is very, very important. You know, civil service has a bad name because we are inaccessible, we are unresponsive. There's no reason why you should be, and I say that with experience. I'm not an outsider. There's no reason for you not to acknowledge and respond to them. Oh, sir, वो भूल गया मैं, सर वो छूट गया. कहीं को मैंने I used to poke somebody. या आपने मेरा मैसेज देखा, हम छोड़ते नहीं है. देखिए मैं तो पकड़ के रखूंगा. वो आदत खराब है ना, अब तो चेंज नहीं होगी. मेरे अगर कोई मैसेज का जवाब नहीं दे तो मैं दोबारा भेजूंगा उस मैसेज. I have nothing to gain now, you know. I'm just trying to, if I may use the word, keep you all in good humor. And good humor to me is that whoever is trying to get in touch with you, please respond. जेब से कोई खर्च नहीं होना. और इंपॉर्टेंस पे बहुत मत जाइएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं. नो, वो कौन इंपॉर्टेंट हो जाए आपको पता नहीं लगेगा. हरी किसी रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाए आपको पता नहीं लगेगा. तो आपको ये बात का ख्याल रखना. एंड देन इफ यू डू दैट, इट विल बिकम अ हैबिट. यू नो, बिकमिंग रिस्पॉन्सिव इज अ हैबिट. If you cultivate that habit over some period of time, then you will automatically respond. You'll find time to respond to that. And as I said in the beginning, I'll conclude with a couplet that ultimately it depends on you. You can't do much to others. And to do that, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. God bless all of you. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने अनुभवों को साझा किया और हमें भविष्य के लिए इतना प्रेरित किया, तो शुक्रिया. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री एस नागपाल सर को, मंच पर आएं और 2 शब्द कहें. दो शब्द. बहुत बहुत शुक्रिया. जितना चीफ गेस्ट ने बोल दिया है, बता दिया है, मैं नहीं समझता कि कुछ बचा है कहने को. अच्छा बुरा और पूरा ब्रह्मांड खोल के रख दिया, अनुभवों का, अच्छे विचारों का. इन्हीं की बात से मैं एक बात शुरू करता हूँ कि बड़ा डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को
घोल के बिल्कुल खिचड़ी बना दें, या खिचड़ी जैसी चीज को सुपर फूड बना दें। इंडिया का एक सुपर फूड खिचड़ी भी है। देखिए, आप अभी एकेडमी में या कहीं जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां यही सब कुछ सुनने को मिलेगा। ये करिए, ऐसे सोचिए, यूं बुलंदी पे जाइए, या बुलंदी से लुढ़कने लगे तो कैसे उठें। तो कुछ शब्द मेरी तरफ से ये कि नॉर्मली जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको जो भी आपके चाहने वाले वेल विशर्स, पेरेंट्स, वो मिलते थे तो उनका एक ही मैसेज होता था कि भाई, आई नो यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू आर श्योर टू सक्सीड। और यही मैसेज आपका जब आप सिविल सर्विसेज करियर में जा रहे हैं, मैसेज वही का वही रहता है। एंड लेकिन क्या बदलाव होता है, वो सिर्फ ये होता है कि हाउ सीरियसली यू टेक इट इनटू योर सिविल सर्विसेज करियर। सिविल सर्विसेज करियर में दोनों चीजें हैं, रूटीन है और अनथीन रूटीन है। आप देखेंगे कि रूटीन खत्म ही नहीं होता है आपका, चाहे वो पेपर वर्क हो या कुछ भी हो, काम करने की शैली हो, सुबह से शाम एक ही वो रहता है। अब आपको चुनना है कि आपको उस रूटीन से बाहर कैसे निकलना है, कैसे नई सोच को जगह देनी है। और रूटीन के लिए किसी ने कहा कि साहब, रूटीन की प्रॉब्लम यह है कि इट कैन ओनली गेट वर्स, सो अप टू यू टू चूज। और रूटीन से बाहर निकलना है तो बिल गेट्स ने कहा कि साहब, नेवर एवर इन हिस्ट्री हैव वी एक्सपीरियंस्ड इनोवेशन एज वी हैव ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। तो बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है। किसी भी सर्विस में आप हैं, काम करने का, नए विचारों को लाने का, नए तरीकों से देखने का, वो उसकी कोई सीमा नहीं है। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस आप देखेंगे कि जो आपके प्रोड्यूसर्स ने क्रिएट किए हैं, उनको बिल्कुल उल्टा करके देखिए कि उसमें कहीं कोई कमी है या उसका स्कोप और इम्प्रूवमेंट का है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि चीजों को आगे ले जाने का, उन्हें इम्प्रूव करने का स्कोप कभी खत्म ही नहीं होता है। कितने ही महात्मा गांधी और बड़े लीडर्स पैदा हो जाएं, ये स्कोप बना रहता है। मुझे पता था बोलने को कहेंगे, तो मैं जल्दी से गाड़ी में एक पर्ची पे 2 पॉइंट्स लिख के लाया हूं। और ये पर्चियां जो हैं, ये वैद की वो पर्चियां हैं कि आप इसे होमवर्क कहते हैं। और मैं हमेशा ये जिद करता हूं कि अगर आपका होमवर्क स्ट्रांग है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप कभी फेल नहीं होंगे, इंक्लूडिंग इन योर सिविल सर्विसेज करियर। अगर आपके पास कोई बहुत गिरा पड़ा कोई भी क्लाइंट आता है, अपनी समस्या लेके आता है, तो उसको वही दर्जा दें जो कि किसी को देंगे, और उसके लिए भी होमवर्क करके रखें। तभी आप उसको एक सेटिस्फेक्शन से वापस भेज सकेंगे। पर्ची पे तो कुछ बचा ही नहीं है। 2 बातें, होमवर्क के अलावा ग्राउंड पे जरूर रहिए। आपकी सर्विस में ग्राउंड का मतलब यह है कि कुछ समस्याएं जिनको कि ग्राउंड की समस्याएं हैं, आईएएस में है, आईपीएस में है, इंक्लूडिंग इंडियन डिफेंस स्टेट्स में है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी जो ग्राउंड से जुड़ी हैं। और जो आप ग्राउंड पे देखते हैं वो फाइलों से बिल्कुल दिन रात का फर्क अलग होता है। सो डू विजिट द ग्राउंड एंड द ग्राउंड सीन्स, forget the weather conditions and brave the weather conditions, do that. होमवर्क के बाद ये मेरा दूसरा आपको एक छोटी सलाह है, और प्रयास ये रहना चाहिए कि मेरा टेन्योर कितना भी पीरियड का हो, इम्पैक्ट आपने छोड़ना है। वहां इम्पैक्ट जो कि आपको बरसों तक लोग याद रखें कि हाँ साहब, एक ये ऑफिसर आए थे। And as I said, it applies to all the civil services. Or besides good work and excellent work, enjoy, as again the chief guest said, there is no end to pursuing a healthful hobby, a parallel career in hobby.
और ये सिविल सर्विसेज करियर में ही पॉसिबल है, where they give you leave, special leave to pursue your varied interests, to pursue higher studies, to pursue research. ऐसा और किसी सर्विसेज में आसानी से नहीं मिलने का है. So please never forget, make a timetable and put on top how many hours are you going to enjoy life, pursue your creative hobbies and different interests. अकेडमी में भी आपको बहुत मौके मिलेंगे, बहुत वैरायटी ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं. उन दिनों सिर्फ जब मैं एकेडमी में गया तो आईएएस और आईपीएस के लिए ही राइडिंग के फैसिलिटी थी. I was in IDS, but I insisted that I will ride a horse and get into all adventure activities, and I did. And one horse decided to give me a good ride instead of I getting a ride. So हर adventure, हर एक बेहतर change, that should be your thinking all the time. Thank you very much. I have exceeded the 2-word limit, but thank you very much. And yes, of course, StudyIQ, the entire team. I mean, it's like a family. Nobody can make out who's the ground worker, who's on the management team. I mean, they work in the spirit that if they have to do manual work, probably they won't hesitate, pull out their jacket aside and get down to it. Keep up that wonderful work, because no other institute probably in such a short time has done so well. All the very best to the team, and of course to the host team here. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your unique perspective. I'm sure the pearls of wisdom will be beneficial not just for those who have been selected to become a part of the Steel Frame of India, but also to the rest of us. Now, may I please invite on stage an individual whose journey is a testament to the power of passion and perseverance. May I please request to come on stage Shri S. Prakash, sir, and enlighten us with his own unique perspective. Shri S. Prakash, sir, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a proud privilege for me to come and talk to you. Well, as our chief guest has already said, nothing succeeds in success. So remember that. I don't want to bore you, but having joined army and thereafter switched over to police was a Hercules job. It's not an easy job. If you have determination, if you have positive thinking, you can do a lot of things. But if you think that you have come into the service to make money, yes, you can certainly make, but that's a risky proposition. You will invite so many troubles for yourself. You will have blood pressure. You will have so many diseases. There will be people who will try to corrupt you, but if you want to get corrupted, yes, nobody will stop, but try. Those who don't want to get corrupt, they can never be corrupted. So please take this a small advice from my side. Help the needy. If somebody comes to you, give your good judgment, patient hearing, and then decide whether it's genuine or not. There are so many fake people also will come to you to seek help because you are in a position of power. And in your power, people can misuse you, misguide you. Please try to elevate and do justice. I don't want to bore you further. Thank you very much and wish you all the very best in your career in future. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने अनुभवों के साथ आपने जो हमें प्रेरित किया। और सही कहा है आप सभी ने कि स्व प्रयत्न बहुत ज़रूरी है। मैं भी ऐसा मानती हूँ कि स्व प्रयत्न और बड़ों का आशीर्वाद पक्षी के 2 पंख जैसे हैं। अगर सही से नहीं मिलता है या उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं आप,
तो आप शायद उड़ नहीं पाएंगे जीवन में। फिलहाल मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी श्री केपी शशिधरन सर को। Friends, first of all, thanks to the StudyIQ, a unique business model making an impact in the highly competitive industry. It is not an industry as such. A education without linking job has no meaning. StudyIQ bridged that gap, making a difference in the young people. The future, somebody told Amrit Kal ka youth. That is what is most important objective of StudyIQ. The founders have identified that 1.4 billion people of this country, there are substantial number of people are youth. They have an aspiration, an education system which churns out people, engineers, doctors, so many faculties, disciplines, without getting into a proper livelihood. That bridging the gap, a business model which is accessible to all the students, all the young aspirants, that is the unique USP of StudyIQ. I am immensely proud, immensely grateful, and privileged to be here. And I thank the organizers for having called me for these felicitation ceremony. The organizers were talking about Everest climbing. Our students, the successful winners, they have already started this ascent on the mountain. I would say there are so many services. Every service has unique USP. People will say Indian Administrative Service is the only service I am born with. Somebody will say police service is the only thing. IDS is the only thing. Whatever. It is your belief. I was interviewed for IFS, IPS in the earlier system also. I was interviewed for I don't want to say the stories. What I want to say, any surveys, as an audit and account service, I know all the services because I do audit of IFS, IAS, all the services. Unfortunately or fortunately, including United Nations, World Bank, all kinds of things. So, services as the revenue service, which happens to be, many of you love to be a revenue service. I was Director General auditing all the chief commissioners of both direct and indirect tax chief commissioners. So, services, I would say, you don't have to exhaust your energy, and you lose your, I don't know, it's your objective. IAS is top because, as Sir was telling, you can make a difference. Making a difference is the theme. You have already made a difference to you, your family, and StudyIQ has helped you to make that difference. And now it is the opportunity for you to make a difference to the people whom you administer in whatever capacity you do. Maybe a revenue officer, maybe an administrative officer, maybe a police officer, maybe whatever career, or defense officer. Defense also, so many things. We are that when Sir was talking about a Mercedes car and all those things, I may not be able to quote anything, but making a difference is what we are here for. Making a difference for yourself, making a difference for your family, that is already done. Making a difference for the people whom you are going to matter. That is where you are evaluated, you are judged, and you make a mark, as Nagpal sir says and Swarup sir says, making a difference. Make a difference. Decide to make a difference. That doesn't mean that you don't enjoy your life. Every moment is precious.
This moment, this virgin moment, we have to capture. Fully live in the moment, mindfully administer, mindfully policing, financial policing or accounting, whatever. Do your job with absolute focus. There is no point in thinking about corruption or getting um, into the jail or whatever. I don't believe in that, because when you do your job, you are absolutely convinced, you have a conviction to make a difference in the people who expect something to be delivered. Service delivery in the country, when we were working, Mercedes and all, now we find Jaguar, Mercedes and all. When we were as service officers, there were only 3 cars. Thanks to 2000 and Manmohan Singh ji and Narasimha Rao ji and all those revolution. Before that, there were only the Ambassador and the Fiat and all those things. And those also very few people used to have. The things have changed. India became a superpower, almost in purchase power parity, third superpower, almost economic power. So you are in a great country, making a difference to the whole world itself. You are training also, many substantial part is going to be abroad. When we were trained, it was not like that. So you have already made a difference, make a difference. And what else I want to say? Enjoy your moment, fully capture the moment, live your life fully, meaningfully, have your hobbies, everything will come side by side. Unless you are mentally, physically, emotionally, psychologically, biologically absolutely perfect, absolutely fit to take on the task, you cannot make any difference. You can't stand up. What difference you are going to make? Your spine is bending. What difference you are going to make? You can't think. You are psychologically, emotionally ruined. What difference you are going to make? So my request to all of you, those who have made these victorious, successful candidates, aspirants of already going to LBSNA, Labasna. I have also visited many times as faculties. And what I feel that all of you, as Swarup sir was telling, take care of yourself. Take care of yourself physically. And sir was also telling, Nagpal sir was also telling, and Prakash sir was also telling, physically, emotionally, psychologically, and in every respect, take care of yourself. If you are comfortable, if you are quite okay, you can make a difference. The like I am okay book, you are I am okay, you are okay. I am not okay, you are not okay. I am okay, but you are not okay. You are not okay, I am okay. Like that, 4 categories, everything I am willing to do, but I don't know. Like that, we can categorize 4 times. We need to be empowered physically, emotionally, psychologically, absolutely comfortable with ourselves, with a conscience, with a conviction to make a difference. That is what Steve Jobs did. That is what Elon Musk is doing. What they believe, they don't live for father's dream or mother's dream. They live their dream. You live your dream. Of course, your father must have told you be an IAS officer like Swarup sir's case. Somebody must have told you be an IPS officer. Somebody wants, he's tall, strong, he wants to be an IPS officer. Somebody wants tax officer, whatever. But I would say you live your dream. Let them influence you. As a child, we have been influenced. Nowadays, in the social media, in the video, so many YouTube,
YouTubers, influencers. Many people influence us. Many influencers make us what we are. Influencers do impact. But beyond that, live your dream. You should understand the choice. I was remembering Chief guest Mr. Swaroop was talking about choice. You have a choice every moment whether you should sleep, half sleep, or fully alert. Even now, whether you should come these function or not. Every time, every moment, you are having a choice. If somebody comes to you for help, whether to help him or not to help him. So choice is another thing. Option. You have an option to make a difference, not to make a difference, or make an impact, not to make an impact. And some sir was telling about giving an impact, and your reputation travels before you. Before I reach Jammu and Kashmir, my reputation goes. I'm a tough guy or whatever, or a bad guy or whatever. If you go to Manipur, before you go, that this person is like that. Some reputation goes in. Any person, corrupt officer comes, they will say, entire office gets aware of that such and such person is coming. He is known for corrupt practices and we will be in trouble. We have to be careful. So your reputation matters. You matter first. First of all, you matter. You be comfortable. You be absolutely knowledgeable. Knowledge, study IQ. One important thing is that it is not a superficial kind of mentoring. It is completely getting into the nitty-gritty of civil service or the study, whatever team they have taken, any competitive exam they have taken, study IQ gets into the depth of it. Both diagonally, vertically, horizontally, no way. The USP of study IQ, let us say draft analysis, detailed your analysis of your DAF. Even that, a team of researchers do every aspect 360 degree of your personality. When you go to the administration, whether it is UP, Punjab or any Kerala or Odisha, wherever you go, be aware of the nitty-gritty of the situation, absolutely get into the statistics, mathematics, science, art of it, culture, sociology. Why you studied sociology and psychology? Why did you study mathematics? So everything matters. Your subjects are important. You must understand your subjects and then you will be able to make a difference. And to make a difference, you must be empowered more than anyone else. I wish you the best. Best of the best. Every time. Thank you. Thank you, sir. And once again, my sincere gratitude to our chief guest and our guests of honor for sharing their valuable insights. I'm sure that our students headed to the academy will do well to remember this as they prepare to become a part of the steel frame of India. Now we move on to the business end of this felicitation ceremony. Like I told you, we have been joined by several toppers, students of Study IQ who have taken out time from the busy schedule to be with us today. First, may I request our chief guest this morning, Shri Anil Swaroop sir, to please join me on the stage. And thereafter, I will be calling out the names of our toppers. May I please request you to come on the stage. If you are coming with your family, please do come with your family. We'd appreciate that. First up, may I please invite on the stage Sparsh Yadav. A huge round of applause for Sparsh Yadav. He has secured an All India rank of 51 in the UPSC Civil Service Examinations for the year 2022. Sparsh Yadav, our first topper for this day.
Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for Nipa Manocha and the proud parents of Miss Manocha. Thank you, sir. Now, may I please call on to the stage Shri S. Nagpal, sir. And the next set of toppers that we have this morning, Pooja Yadav. Pooja Yadav to the stage, please. Rank 219 in the UPSC CSE for the year 2022. And now I invite onto the stage Pranjal Jain. Pranjal having secured rank 335 in the examination. Thank you, Nagpal sir. Now, please may I invite onto the stage Shri S. Prakash sir. Shri S. Prakash sir, please could you grace us with your presence on the dais. And next up, we have Shri Kunal Jain. Shri Kunal Jain having secured rank 356 in the examination for the year 2022. Now to be felicitated by Shri S. Prakash. Again, can we have a round of applause for both these gentlemen present on the main dais here? Thank you, Akshat. Thank you, Akshat. Parents, thank you, Uncle Auntie. Thank you, sir. Thank you for your presence on the dais. Thank you so much. Now, please, may I invite on to the dais our final guest of honor this morning, Shri KP Shashidharan, sir, to join us on the stage with our next set of students who have indeed done the impossible, a dream that many aspire, but only a handful achieve. Shri KP Shashidharan sir now joining us on the main stage. And now, please may I invite Sahil Kumar to join us on the stage. Please, rank 438 in the examination for the year 2022. May I now request Shri Rahul Kant, Rahul having secured rank 497
now to be felicitated by our guest of honor this morning. Thank you, Rahul. Next up, may I please invite on the stage Shri Madhav Bharadwaj. Madhav has secured rank 536. Shri Madhav Bharadwaj to be felicitated by Shri KP Shashidharan. Thank you, Mr. Bharadwaj. And finally, we will invite onto the stage Himanshu. Himanshu having secured rank 864. Our final awardee for this morning. Thank you, Himanshu. Thank you, Shashidharan sir. Thank you for your presence. Before we go forward, it would be most apt that we call on to the stage the parents, the proud parents of Nipa Manocha ji. Please, may I invite onto the stage the parents of Nipa Manocha as well as Nipa Manocha herself. Of course, the parents are the foundation on which all of this success is built, and it is only apt that we respect and recognize the contribution of the parents in the success of any individual. Please. May I invite onto the stage Shanil Swaroop sir finally, please, to do the honors. Can we have a huge round of applause for the parents of Miss Nipa Manocha, and indeed every parent, each and every parent of all the students. They are the foundation on which the success of each of these individuals has been built, and we at StudyIQ would like to respect and recognize those efforts. Thank you, ma'am. Thank you, sirs. And now, before we go forward, well, indeed, we are, as I told you, we are privileged to have a bunch of toppers amongst us, with us today, and it's an even bigger privilege to call one of these individuals, a group of these individuals, to come share their experiences, their trials and tribulations with you. First up, may I invite onto the stage Miss Pooja Yadav. Miss Pooja Yadav to come onto the stage and speak about her journey, the journey that every aspirant takes, but only a few manage to conquer. So I'd like to invite Miss Pooja Yadav to come onto the stage and share her insights with us. Good afternoon, everyone. I am Pooja, and I have secured All India rank 219 in UPSC CSE. Hopefully, I will get IAS this year, and I want to thank StudyIQ for their guidance and motivation through their interview guidance program. And they give a very comprehensive set of questions for detailed application form, and gave a very comprehensive feedback in the mock interview also. So I want to thank the team. I would like to lead my career in civil services through the wise words given by the honest guest present here. Thank you so much. थैंक यू सो मच पूजा मैम. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पे साहिल सर को, जो अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे ताकि बाकी लोगों को हम प्रेरित कर सकें. Esteemed guests, my dear colleagues and friends, very good afternoon to all. However, I have not prepared anything to speak over here, but I would like to say that when I started this journey preparing for UPSC, everybody said that you will get respect and power after clearing the examination. But during the course of my journey, I realized that
it is more of responsibility to serve the people of India. So and all of us are having our own journey. So we all have our ups and downs are there in the journey, and we all face difficulties. कि कठिनाइयाँ तो सबकी ज़िंदगी में आती ही है. So I would like to end. I do not have any words. I'm feeling really grateful to come to this felicitation. I would like to say that we all are a book. A new chapter is going to add to our life. Let's write it well. Thank you so much. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर. अब मैं मिस्टर मानसवी शर्मा सर को आमंत्रित करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि क्या क्या अप्स डाउन रहे हैं वो हमारे साथ शेयर करें. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sirs. First of all, sir, I would like to thank everybody who is here and such kind words, such guidance the honorable guests have provided. And up till now, sirs, your guidance had helped us to clear the exam. I think the guidance is even more important now because we are entering into the phase in which you have already spent 30-40 years. And to become a good civil servant, a better civil servant, a second generation civil servant, I would go on to say, after your guidance, I think it's even more important that we follow the wise words and advices that have been given to us. A big round of applause to the team, management and staff of StudyIQ, without whom I think we all would not be here. And it was through the medium of StudyIQ that we could get the guidance of such esteemed guests. And there is one thing that our Honorable Prime Minister also said, संकल्प से सिद्धि. संकल्प से सिद्धि सच में होती है. ये मैंने अपनी जर्नी में देखा है. I've given 5 serious attempts at this examination. And one thing I used to say that I have lacked a good team. It is through StudyIQ, through Sir's initiative, Anil Swaroop Sir's initiative, that I could get that team. I got such a good team of 4 members in addition to me. I would like to name every one of them. 2 of us have cleared. One is Himanshu, he's sitting here, rank 288. I got rank 101. 3 of our friends, they could not clear this year. But I am damn sure they are going to clear the exam. If for some reason they are not going to clear the exam, they will be such great assets to the nation because we have imbibed that values, that spirit, and seriously, a team effort has pulled me up and given me this rank and success. So just one thing I would like to add here. We all are here. I was part of the Haryana State's Felicitation program also. I could not meet everybody. Today, whosoever is present here, I think we all are one team, the batch of 2023 civil servants. We should get together, exchange our numbers, and take the numbers of the respected guests also, because Anil Swaroop sir, he sends messages every week, and I was one of those who could not respond. So I think all those messages, all those criticisms, they go to me. And I was the one day I saw that, okay, I have written 3 apologies to sir. Sir, I could not respond, I'm really sorry. I could not respond, I'm really sorry. But one thing I made sure that I read all those messages. And one piece of advice, if I can give, is to my fellow friends and colleagues who are here, please read sir's book. Both the books. I read the first 2 books when I was preparing. That was from the point of view of an aspiring civil servant, because I wanted some ethical anecdotes, some good keywords. Now, sir, I've started reading those books again from the viewpoint of becoming a good civil servant. He stressed that honesty, integrity, and efficiency, they have to be clubbed together. One thing is incomplete without the other. If one is honest but is not efficient, in the administration, that will be a hurdle.
You are expected to be honest. You are sitting on such a post that it has to be given. You are honest, you have to be integral. But you are sitting here to bring in efficiency in the governance. Be a non-pliant officer. As sir has given many anecdotes, and he has repeated here also, that within the first few years, your personality, your aura will travel everywhere. It is your first, second, and third decisions which will ensure how you will perform in the governance, how you will be expected to perform in the governance. That personality will travel. So I think I will keep all these good learnings that I have gathered from sir's books and from everybody who has shared the experiences here into becoming a good, better, and a transparent and an efficient civil servant. Last but not least, since I thanked StudyIQ, for me, StudyIQ is Furkan sir, and Furkan sir is StudyIQ. He was the point of access. One day, when I gave the mock interview here, I was sitting and I just had a thought in my mind, because this is going to be the last time I'm going to attempt this examination. I shared that thought with sir. And he was so gracious and kind enough to say, Manasvi, you will clear the exam. Keep that thought out of your mind. Even if you don't clear, we'll sit one day, we'll decide what to do. We have so much guidance available in front of us. Definitely, you will be a very good asset to the nation, to the society. So thank you very much, sir. And thank you very much for calling me here. Thank you. धन्यवाद सर. अब मैं स्टेज पर अक्षत कुमार सिंह सर को बुलाना चाहूँगी. उनसे जानना चाहूँगी कि पूरी जर्नी में वो यादगार पल उनके कौन से जिसको हमारे साथ वो साझा करना चाहते हैं. Good afternoon, everyone. So I am Akshat Kumar Singh and I have secured All India rank 428 in this attempt. So सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी छोटी नहीं थी. जैसा हम लोग सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग सोचते हैं, मैंने काफ़ी जगह बोला भी है कि हम वो चुने हुए लोग हैं जो एक अटैम्प्ट में या दो अटैम्प्ट में सीधा एकदम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे. लेकिन धीरे धीरे इस एग्ज़ाम से हमको काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं. मेरे को 4 अटैम्प्ट लगे यहाँ तक पहुँचने में, 2 बार सिलेक्शन हुआ. एंड आई हैव रियलाइज कि चाहे सक्सेस मिली हो चाहे फेलियर मिली हो, उसने मुझे शेप किया है. मेरी पर्सनैलिटी में शुरुआत में काफ़ी सारे फ्लॉज थे और उन फ्लॉज को चाहते हुए और ना चाहते हुए भी एक एक अटैम्प्ट में वो फ्लॉज मेरे ठीक हुए हैं या वो उनको कुछ हद तक मैंने ठीक किया है. तब जाके आई कैन से दैट आई हैव रीच्ड हियर. सो जैसा कहते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज़ व्हाट मेक्स यू व्हाट विच स्टार्ट्स यू टुवर्ड्स योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट. So I would like to thank this journey as well, and I am grateful that I have seen those failures which I have seen in my life, because I am what I am today because of those failures. Coming to the next part, I would like to thank StudyIQ team and especially Anil Swarup sir, because he has been a crucial part of this year's interview preparation mainly. He helped me quite a lot in deciding the interview questions, sir, as you guided, like being an IPS officer, how questions can be in the interview board, and they were quite in that line as well. And I am grateful to secure quite good marks in interview, and I am really thankful to you for those guidance. एंड जैसा सर ने बोला, सर हमको आर्टिकल्स भेजते हैं, हमको मैसेजेस भेजते हैं. Luckily, I was one of them who responded to them. So, and I'll continue to respond to them, sir, as well. And sir की guidance को we all will take by heart, and I'm sure we all will be good civil servants in this life. And I'm thankful to God, thankful to my family, and all the teachers and mentors and all the esteemed members present here for their guidance and their support. Thank you so much. Thank you, Akshat, for sharing your experience. Ladies and gentlemen, we have been joined by the proud parents of the candidates who have in fact cleared UPSC CSE 2022. And so on this day, on this very auspicious day, I would like to invite the parents of Akshat Kumar Singh ji and come share their experience as to what goes on into the mind of a parent. We do know and we do realize the pressure that exists on a candidate, on an aspirant. But I think it's only pertinent that we honor and recognize the effort of the parents, the fundamental block of support that eventually lets these birds fly to the zenith. Please, can we have the parents of Akshat Kumar Singh come onto the stage and share their experience, please?
सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम IQ स्टडी ग्रुप की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिनकी वजह से हम अब ये आज मतलब खुशी का पल देख पा रहे हैं और हम अपने बेटे का जैसे IAS में सफलता के लिए जो मेरा सपना था वो साकार हुआ है। उसकी सफलता की वजह से हम जो हमारे देश के जो महारत्न सामने बैठे हैं उनको हम उनसे रूबरू हो पा रहे हैं कि जो बाकी संभव नहीं था, इसके बगैर संभव नहीं था आप सबसे रूबरू होना। और इसी उपलक्ष्य में जो इस ऐतिहासिक क्षण आज़ादी के अमृत काल में जो हमारे भविष्य के कर्णधार मेरे सामने बैठे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और उनसे उम्मीद है कि वो पूरी मेहनत से, लगन से और ट्रांसपेरेंसी से अपना काम करेंगे और जो पावरफुल हैं वो तो अपना हक ले ही लेंगे किसी न किसी तरीके से। उनसे प्रार्थना है कि वो जो ज़रूरतमंद हैं उन तक न्याय पहुंचाएं। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सपना साकार हुआ है। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर हिमांशु मंगल सर को। वो आए और हमें एक लाखों युवा साथियों को एक क्या मैसेज वो देना चाहते हैं अपनी पूरी जर्नी से। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु मंगल। तो पहले तो मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा उन सभी को जो यहाँ पे बैठे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड इन द सिविल सर्विसेज, देन द एस्टीम गेस्ट एंड द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवेंट मिस्टर अनिल स्वरूप सर। कोई भी इवेंट होता है जैसे सिलेक्शन होने के बाद जनरली स्टेज पे आने का या फेलिसिटेशन करने का मौका किसको मिलता है? हम कैंडिडेट्स को। बट जो एक्चुअल फाउंडेशन है, एक्चुअल जो लोग हमको एम्पावर करते हैं वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो आई वुड लाइक टू रियली थैंक ऑल दोज पेरेंट्स हु आर हेयर। मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, सारे स्टेज पे हम ही आते हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ में हम ही होते हैं, बट वो जो पेरेंट्स हैं ना वो घर बैठ के वो हमको एम्पावर करते हैं। वो हमको बोलते हैं कि तुम बढ़ो आगे, मतलब तुम मेहनत करो, तुम एफर्ट्स मारो, तुम बढ़ो, तुम गिरोगे भी तो तुम इससे नीचे नहीं गिरोगे। तो एक वो प्लेटफॉर्म देते हैं, उससे नीचे नहीं गिरने देते। तो लेट्स हैव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दोज पेरेंट्स हु आर सिटिंग एट आवर होम्स। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि एक टाइम था, मुझे याद है जब मैं प्रिपरेशन में एंटर किया था तो मैंने अनिल स्वरूप सर का एक वीडियो देखा था। तो एक टाइम था जब सर की वीडियो देखी थी और मैं सुन रहा था अपने रूम पे या घर पे बैठे हुए ना, और आज वो टाइम है जब मैं बोल रहा हूँ एंड आई एम फॉर्चुनेट कि सर बैठ के सुन रहे हैं। तो यू नो इट शोज़ कि वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर मूविंग अहेड। हम स्टक नहीं एक जगह पे ना। और लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है? वही मैटर करता है। तो मैं अनिल स्वरूप सर के बारे में कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। मतलब सर हैज़ ऑलरेडी रिटायर्ड और सबको पता है कि स्टडी IQ ने क्या किया था, एक ग्रुप्स बना दिए थे। आई एम श्योर सर का काफ़ी बड़ा रोल रहा होगा उस आइडिएशन में। और कई बार आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो सर ने ग्रुप्स बनवा दिया और सर हर ग्रुप का पार्ट थे। सोच रहे हो मतलब 60+ की एज पे ये काम करना, लोगों को इंडिविजुअली मैसेज करना, उनसे रिप्लाई एक्सपेक्ट करना, उनको फॉलो अप करना, इट्स टू मच एट दैट एज। मतलब सर कुडोज टू योर एफर्ट्स, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि ऐसा नहीं है, मतलब हम कोई भी जो चीज़ करते हैं ना, इट रिफ्लेक्ट्स इन एवरी एक्शन ऑफ आवर्स। तो सर ने जैसे भी द वे ही हैज़ कंडक्टेड हिमसेल्फ in the civil services throughout his career, we could see that in action even during our interview preparation. So how we do one thing is the way we do everything. ये कोट है जो हमने पढ़ा है and I could see it in action. तो एथिक्स के आंसर्स में हम लिखते थे, मैं तो जनरली कोट करता था सर का नाम, और मुझे यहाँ पे सर के साथ यहाँ पे आने का मौका मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ थी कि एथिक्स में हम लिखते हैं कि हाउ टू बी एथिकल, हाउ टू बी ऑनेस्ट ना, इसका एक आंसर लिखते थे। उसमें एक पॉइंट लिखते थे कि यार फर्स्ट पोस्टिंग शुड बी अंडर एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो समझ रहे हो, अभी एक यंग ब्लड है जो पीछे बैठा है, एक जनरेशन है जो जिसने ऑलरेडी 30-40 ईयर्स सर्विस में ऑलरेडी दे चुके हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ है जो ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी आर लकी एंड फॉर्चुनेट कि सर के गाइडेंस में हमें अपना करियर स्टार्ट करने का मौका मिला है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। सेकेंडली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्टडी IQ। स्टडी IQ कैसे शुरू हुआ होगा? मतलब एक यूट्यूब वीडियो होगी, वो उन्होंने बनाई होगी,
कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा वो हो जाएगा। किसी ने बताया था कि 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो समझ रहे हो, मैं बोल रहा था कि आइडिएशन, उस पर काम करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और समहाउ स्टडी IQ हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ रोल इन आवर ओन जर्नी एज वेल। और जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो ग्रुप था, इट वाज रियली ऑसम। मनस्वी एंड मी वर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, और इट वाज नॉट जस्ट द प्रिपरेशन ग्रुप, वी कंटिन्यूड इट टुवर्ड्स, like it was informal as well. तो we have become very good friends and it will go on for life. तो एक और चीज़ है कि हम जितने भी लोग सेलेक्टेड हैं उनका एक ग्रुप है, तो उस पर कुछ चीज़ें चलती रहती है, उस पर कुछ आइडियाज़ पिच होते रहते हैं। कुछ लोग आइडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, कुछ लोग आइडियाज़ के फेवर में बोलते हैं। तो मेरे को हमेशा लगता है कि ना आइडिएशन चलता रहना चाहिए, चीज़ों पे काम चलता रहना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज़ तो जंक में जाएंगे, ट्रैश में जाएंगे, बट उससे होगा क्या? कुछ घटेगा नहीं, कुछ जाएगा नहीं ना, कुछ सीखने को ही मिलेगा। और तो कल हम ग्रुप पे एक आइडिया डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ लोग फॉर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे। तो किसी ने एक कोट डाला था कि इफ़ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक ए चेंज, थिंक ऑफ एन एटम। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब इट्स वेरी क्लीशेड थिंग। आई फाइंड इट वेरी क्लीशेड कि बोलते सब है बट कर कोई नहीं पाता। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग जो कर भी रहे हैं, मतलब हमारे पास सर ही हैं एग्जाम्पल में ना, और बहुत सारे ऑफिसर हैं। बस ये कि उनकी विजिबिलिटी इतनी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम सर्विसेज में जाएं तो वो चीज़ यहीं नहीं रुकनी चाहिए ना, वो आगे चलती रहनी चाहिए। कुछ लोग तो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और इसीलिए दुनिया चलती है कुछ लोगों के कारण ही ना। एक और पॉइंट है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, आई स्टार्टेड इट इन 2017 व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो मैंने वो अटेम्प्ट दिया था, मैंने बहुत मेहनत भी की थी, बट समहाउ आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स बाय फ्यू मार्जिन। बट बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी फाइनेंशियली साउंड, तो आई हैड टू लीव माई प्रिपरेशन मिडवे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी जब हमारा हो गया है ना, तो वी आर कैपेबल इन सम सेंस। हमारे पास एक वॉइस है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होंगे आगे जाके ना, बाकी और रिसोर्सेज भी होंगे, कुछ कनेक्शंस होंगे जिनसे हम लोगों की हेल्प कर सके। तो इन वॉट एवर कैपेसिटी वी कैन, इन वॉट एवर वे वी कैन, वी शुड हेल्प द सोसाइटी। अगर हमारी सोसाइटी में से, हमारे आसपास से कोई एक ऐसा इंसान है जो डिजर्विंग है एंड ही और शी इज़ नॉट एबल टू रीच देयर पोटेंशियल, एंड वी आर फेलिंग एज ए सोसाइटी। सीरियसली कोई पॉइंट नहीं है फिर हमारे कुछ करने का ना। तो छोटी सी भी हेल्प हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सीरियसली वी शुड डू इट। मतलब जो गुडविल होती है ना, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। पैसा तो सब कमा, मतलब पैसा तो कमा ही लेंगे फाइनली, बट एक जो गुडविल वाली चीज़ है ना, उसका ट्रांसमिशन होता है, वो इट्स इमेंस। एक और पॉइंट है कि वेन एवर वी ग्रो अप, तो हमने बहुत कॉन्क्रीटाइज्ड होते जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। एक हमारी पर्सनैलिटी में जो फ्लूइडिटी होती है ना, जो हम बचपन में होती है, वो somehow it gets lost. I love to explore different things. जैसे I've done certification courses in paragliding, skiing, mountaineering. तो मेरे से इंटरव्यू में ही पूछा था कि why paragliding, why did you do it? और मैं जब करने भी गया था तो मेरे को घर वालों ने बहुत मना किया था, they press me so hard not to do it, but I just do it whatever I like. मतलब मुझे नई चीज़ एक्सप्लोर करना पसंद है। तो इंटरव्यू में मैंने यही बोला था कि सर, एक जब हम बच्चे होते हैं ना, एक इंक्विजिटिवनेस होती है, हमें चीज़ें करने में डर नहीं लगता, हमें क्वेश्चंस पूछने में डर नहीं लगता, हमें नई चीज़ें सीखने में डर नहीं लगता ना, नई चीज़ें ट्राई करने में डर नहीं लगता। और हम थकते नहीं हैं जब हम बच्चे होते हैं, हम बहुत एफर्ट मारते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, हाथ पैर तुड़वा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। बट जब बड़े होते जाते हैं तो वो जो इंक्विजिटिवनेस है वो ख़त्म होती जाती है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी इंक्विजिटिवनेस ख़त्म हो। इसलिए मेरे को नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है, नई चीज़ें सीखना पसंद है। और वेन एवर आई एम गोइंग फॉर एनी टेक ऑफ इन पैराग्लाइडिंग, इट इज़ ऑल सोलो। तो नीचे कुछ नहीं होता, मतलब इट्स ऑल ओपन एयर, सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। और तुम्हें पता है, जब तुम इतनी हाइट से, जहाँ से केवल बादल दिख रहे हैं, वहाँ से पैराग्लाइडर लेके अकेले कूद सकते हो, तो आई डोंट थिंक यू वुड बी अफ्रेड टू डू एनीथिंग। सो दैट शुड बी द वे वी शुड कंडक्ट आवर सेल्स, बी इट इन द सर्विसेज या फिर जो भी आगे जाएँ। तो हमारा जो कंडक्ट है वो सीखने वाली चीज़ है, जो हार्डवर्क करने वाली चीज़ है, जो अब तक करी है, वो यहीं नहीं रहनी चाहिए ना, इट शुड कैरी ऑन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। अब मैं नीपा मनोचा मैम के पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगी, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद और उनके त्याग के बिना शायद ये जर्नी अधूरी होती, और यहाँ पर तक पहुँचना उनका बहुत बड़ा एक रोल अदा होता है। इसलिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। Hello everybody. What should I say as a parents or so? क्या कहना चाहिए? Actually, first of all, a big thanks. First of all, I would be thankful to the StudyIQ team and the respected guest sitting here. Actually, she has made us proud after 35 years. I also appeared for IAS. 3 times I missed after interview, you can say. I cleared prelims, mains and all.
So I forgot everything what is IS and all. So it was my dream, and she has made us proud for And this. She has, actually, in family history, it was not easy for us yeah. to do all the things again and to observe these failures again in the life, because the way he had quit for my mother-in-law, actually she was against that part, because she sacrifices a lot for him. Being And mother. now, for today, it's actually, a big moment for us. She has bridged the gap actually after 35 years. And you can say today I have actually succeeded, cleared it. This is my feeling. I'm speaking in front of you, a very experienced person of this field. So, what should I say? It's my wishes to all of you, those who have cleared the exam. And And one more thing, it's not a simple journey, it's a tapasya, just like a tapasya. And now it has been fulfilled. And we had worked a lot. So, and slowly we have realized. So this is the first time I am realizing that my daughter has cleared. So it will take time. It will take time. It will take time. So we are still in, so nice. Sir. You can understand our feelings. So thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And even though I'm not a parent, I can completely understand the feeling, the depth of the feeling that sir and ma'am have tried to convey here. Before we go forward, now I'd like to invite onto the stage Mr. Madhusudan, the Director of Content and Strategy for StudyIQ, to come address our toppers as well as our audience this morning. Respected Chief Guest, Anil Swarup sir, guest of honors, would-be bureaucrat, and many congratulations to you from a wanted-to-be bureaucrat. So yes, all of you in this hall are either bureaucrat, would-be bureaucrat or wanted-to-be bureaucrat, and that's the reason. जो भी आप लोगों ने बातें करी, अनिल स्वरूप सर ने कहा कि स्टडी आईक्यू से हम क्यों जुड़े. So the sole reason is this passion. कि वो सारी चीजें जो एक एस्पिरेंट को चाहिए होती है, दिस इज व्हाट वी थिंक फ्रॉम, कि क्या हमें अगला चीज करना चाहिए, इसका थॉट अपना कहां से आता है कि आपको क्या चाहिए होती है, क्या चीज वो है जो हमने मिस करी. अभी जब मैं एस्पिरेंट के साथ बात कर रहा था तो उनमें एक आया कि लाइक साहिल हैज साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल, सो ही मस्ट हैव ए टेलीग्राम चैनल, ताकि वो फ्यूचर में जो एस्पिरेंट हैं, जो उसने प्रॉब्लम फेस करी है, वो प्रॉब्लम बाकी एस्पिरेंट ना फेस करें, उनको भी वो कैसे गाइडेंस मिल सके. सो दिस इज द सेम मोटो with which we also function, because of which probably we have been able to understand the needs of the aspirant, and because of which we have been able to gather so many successful candidates in our first felicitation function. And बाकी जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, खास करके नागपाल सर से मैं काफ़ी चीज़ें सीखता रहता हूँ. नागपाल सर से मैंने ये भी सीखा कि होमवर्क करो, और कुछ पॉइंट मैं भी लिख करके लाया हूँ, ठीक है. एंड वन ऑफ दोज पॉइंट्स इज कि आप सारे लोग जो हैं अब से वॉच किए जाएंगे, आप जो भी करोगे वो देखा जाएगा. आई वुड लाइक टू शेयर एन एक्सपीरियंस फ्रॉम जापान. एक व्हीकल वाज ड्राइविंग, और जैसे रात को अक्सर होता है कि मिडनाइट का टाइम है तो कोई गाड़ी नहीं होती, बट सिग्नल रेड था, तो द ड्राइवर स्टॉप द कार. नेचुरल सी बात है, फेलो पैसेंजर सेड कि लेट्स मूव अहेड, कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है. तो उसने बोला कि व्हाट इफ ए चाइल्ड इज वॉचिंग, तो उस पे क्या असर पड़ेगा. वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है. यू आर डेफिनेटली बीइंग बास्ड, यू आर ए रोल मॉडल नाउ. अभी तक ऐसा होता था, या अभी प्रैक्टिकली ऐसा है कि हम अगर एज ए टीचर किसी को कुछ कहते हैं, किसी आंसर लिखना चाहिए, ठीक है, वो एस्पिरेंट लिखेगा क्योंकि उसको टीचर ने कहा है. फर्स्ट थिंग होते हैं पेरेंट्स जो कहते हैं, और पेरेंट्स के बाद टीचर का रोल आता है, स्टूडेंट बोलता है. लेकिन अगर आप ऊपर से बोल देते हो कि नहीं आंसर लिखने से कुछ नहीं होता है, असली चीज है लक, भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो एस्पिरेंट ना कल से भगवान की पूजा करने में लग जाएगा. सो नाउ यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल. आप चाहे जहां पे भी सोशल मीडिया पे बोलें, टेलीग्राम चैनल पे बोलें, या जहां कहीं भी जो भी बोलें,
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलें। सारे फेलो एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं और आप उनकी जिंदगी या तो बदल सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। इट्स कंप्लीटली इन योर हैंड। सो इसको एक अच्छे वेपन की तरह यूज करें। एंड देन आई वुड लाइक टू थैंक यू पीपल एज ए टीचर। अभी तक ये है कि आप हो सकता है स्टडी आईक्यू के स्टूडेंट थे, अब स्टडी आईक्यू आपकी वजह से जाना जाएगा। सो इन फ्यूचर आप ऐसे चीजें करें कि हम ये बोल सकें कि सी दिस वर्क हैज बीन डन बाय आवर स्टूडेंट, प्लीज मेक अस प्राउड। वी वुड बी नोन फॉर योर गुड वर्क। एज यू सेड वी हैड अ लॉट ऑफ ड्रीम एंड अब हम ये चाहेंगे कि आप वो ड्रीम पूरा करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जैसा आपने कुछ साल पहले एक टारगेट सेट किया होगा कि हमें ये करना है और यहाँ पे अचीव करना है, वन ऑफ दैट टारगेट वाज कि आईएएस बनना है। आज आप घर जाएं और एक टारगेट सेट करें कि हमें किस टाइप का सिविल सर्वेंट बनना है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू गाइड यू। नए लोग होंगे, नई बात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर है तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Madhusudan sir. And as we are now headed to the culmination of this first ever felicitation ceremony for the toppers of StudyIQ, may I now invite onto the stage the head of media from StudyIQ, Shri Amrit Upadhyay, to kindly deliver the vote of thanks. वोट ऑफ थैंक्स के पहले सर का ये सुझाव जो है इस पर अमल कर लेते हैं। पहले सभी टॉपर्स को बुला लेते हैं एक बार, और एक स्टेज फोटो करने के बाद फिर आगे की कार्रवाई कीजिए। आइए, आप सभी आ जाइए। स्टेज का मैनेजमेंट देखने वाले लोग भी आगे आ जाएं। अनिल स्वरूप सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। नागपाल सर, मैम, एस प्रकाश सर, शशिधरन सर, मधुसूदन, प्लीज कम। प्लीज हैव अ सीट। इस सेरेमनी के अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं, और इससे पहले कि मैं सबको धन्यवाद कहूं, अनिल स्वरूप सर ने कहा था कि अपने बातचीत के दौरान कि जब एक चीज़ कुछ रिफ्लेक्ट करती है, उसका रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे न जाने कितने लोगों की मेहनत होती है। तो थोड़ी सी बात उस मेहनत के बारे में करेंगे, उसके बाद आप सबको धन्यवाद कहेंगे, फिर आगे लंच का कार्यक्रम होगा और फिर आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। तो उस मेहनत के बारे में अगर बात करें, जब हम किसी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, तो जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो उसमें करीब करीब 50 लोगों की एक टीम लगती है, जिसमें से इवेंट कहाँ होगा, उसके स्टेशनरी पार्ट से लेकर और उसमें और क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कैब कौन बुक करेगा, लोगों को रिसीव कौन करेगा, टाइम गैप जब आए, एक कैंडिडेट जब किसी और मॉक इंटरव्यू में फंसा हुआ हो और उसकी टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही हों, उस दौरान पैनलिस्ट से कौन बातचीत करेगा, कौन उनको एंगेज रखेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और मुझे एक लंबा अनुभव है मॉक इंटरव्यूज कराने का, तो हमारी टीम ने जिस लेवल पर काम किया, मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहता हूं। अनिल स्वरूप सर के गाइडेंस में हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं अनिल स्वरूप सर के साथ कई ज्ञानवाणी सेशन में बैठा हुआ हूं, और उनकी पर्सनालिटी में ही ऐसी चीजें हैं कि जब वो बोलते हैं, अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें वैसी सीखते हैं जो सर डायरेक्ट नहीं सिखाते, बल्कि आप सीख जाते हैं। तो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन करने वाला व्यक्ति अगर अनिल स्वरूप सर के साथ थोड़ा वक्त बिताए, जिसके लिए मैं कहूंगा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें उतना वक्त मिला, तो जब ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम डिजाइन हुआ और जब मॉक इंटरव्यूज डिजाइन हुए, तो हमारी कई सारी टीमें उसमें काम करती हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जिसमें सर ने बताया,
फुरकान हाशमी, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में। मैं उस मीटिंग की बात याद दिलाऊंगा जिसमें फुरकान ने दावा किया था कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से वाकई बच्चों को फायदा होगा, इस बात की गारंटी है। ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होगा। और फिर अनिल स्वरूप सर के साथ जिस तरह का कोऑर्डिनेशन और जिस तरह की मेहनत, सर ने जैसा कहा कि फुरकान सोते कम हैं, मैसेज ज्यादा करते हैं, तो उतनी मेहनत उन्होंने लगाई। इसके बाद एक मेंबर का नाम आता है जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि और वैल्यू एडिशन कैसे करें। हमारी टीम मीटिंग में आदित्य को कहा गया कि डैफ का एनालिसिस करना है। आदित्य पीछे खड़े हैं। जो लोग पर्दे के सामने हैं उनके लिए तो तालियां बजती ही हैं, पर्दे के पीछे वाले लोगों के लिए ज्यादा ताली बजनी चाहिए। आदित्य आइए। और आदित्य ने 2 लेवल पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। पहला कि हमें अपने किसी ऑफिस से निकलकर जेपी सिद्धार्था में कंडक्ट कराना था मॉक इंटरव्यू, तो मॉक इंटरव्यू की जो A to Z जिम्मेदारी थी वो आदित्य ने निभाई। आदित्य के साथ एक बड़ी टीम भी अटैच्ड है और ये जिम्मेदारी फाइनली डिटेल्ड जो डेफ होता है उसकी एनालिसिस की जिम्मेदारी शिफ्ट किया गया रजत पर। रजत कहां है? रजत आइए स्टेज पर। रजत मेंटोर्स टीम में महत्वपूर्ण भूमिका में है, उसको लीड कर रहे हैं। आइए प्लीज कम। जब ये जिम्मेदारी इनको दी गई तो इन्होंने मुझे पहला डेफ का एनालिसिस करके भेजा कि सर दिस इज सैंपल, प्लीज अप्रूव। मैंने पूरा डेफ का एनालिसिस पढ़ा, उसमें 300 क्वेश्चंस थे करीब, पर्सनलाइज्ड था, कैंडिडेट के हिसाब से बना हुआ था। कैंडिडेट किस जिले में रहता है, उसके आसपास कौन से इंडस्ट्रीज हैं, डेफ से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर काम किया गया था। और उसमें मैंने सिर्फ एक सुधार बताया था, स्टडी आईक्यू का लोगो थोड़ा बड़ा कर देना, और कुछ था नहीं बताने को। मैंने पहले दिन आदित्य और फुरकान भी थे उस मीटिंग में, आदित्य, फुरकान और रजत, इन तीनों लोगों से हम लोग जब बैठ के सारे लोग बात करते हैं, स्टडी आईक्यू के वर्क कल्चर की एक सबसे अच्छी बात है कि हम बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग खूब करते हैं और उसमें खूब आपस में नोकझोंक भी करते हैं ताकि एक अच्छा रिजल्ट निकले। तो हमने पूछा कि भाई एक आदमी का 300 सवाल, और मॉक इंटरव्यू अभी तो पता नहीं है कितने कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे, कितने हमारे यहां इंटरव्यूज देंगे, और कितने ऐसे लोग होंगे जो बेशक मॉक इंटरव्यू के लिए ना आ पाए लेकिन उनका डेफ का एनालिसिस करना होगा। तो उस समय यह हुआ कि उत्साह के साथ कि हो जाएगा सर। तो हमने भी कहा कि ठीक है। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा मत करना कि अगर हमारे यहां 500 लोग अगर मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, 200 दे रहे हो, जो भी नंबर हो, ऐसा ना हो कि 199 लोगों का डेफ एनालिसिस हो जाए और एक का छूट जाए। वो नहीं होना चाहिए, इसको मैनेज करना है। अल्टीमेटली ही सेड कि हो जाएगा, और स्थिति यही हुई सर कि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते रहे लोगों के, इनकी टीम, पूरी टीम, इन लोगों ने उस दौरान 17-18 घंटे तक एक एक दिन में काम किया है और डेफ का एनालिसिस किया है। सल्यूट करने लायक काम किया है। फिर मॉक इंटरव्यू को कंडक्ट करने में मैंने जैसा बताया कि पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए आदित्य ने, फुरकान ने इस पूरे इवेंट को, इवेंट कहना ठीक नहीं होगा, मॉक इंटरव्यूज आपके जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा था, उसको सक्सेसफुल बनाया। और आप लोगों ने आज जो बातें की हैं बड़ी दिल से की हैं। ये बहुत फॉर्मल एक बातचीत नहीं थी कि आप स्टेज पर आए और आपने कहा थैंक्स स्टडी आईक्यू। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आप लोगों ने जो भी बातें की बड़ी दिल से कही, और ये दिल से कही बातें अनिल स्वरूप सर के गाइडेंस में जो चीजें शुरू हुई, सर के कुछ ग्रुप्स में मैं भी हूं, एक एक ग्रुप का सर का मैसेज, ग्रुप के भीतर ग्रुप बनाना,
और सर कई बार हम लोग को डांटते भी रहते हैं बीच बीच में अगर डिले हो गया ग्रुप बनाने में। तो इतना सारा जो गाइडेंस रहा और आप लोग की जो बातें रही, और सबसे बढ़कर कि जो पेरेंट्स आप लोग के साथ आए और उनके दिल से जो बातें निकली हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं स्टडी आईक्यू के बिहाफ पर आप सबका। आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और ये भी महसूस कराया कि हमने भी आपका साथ दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अभी क्योंकि मंच पर 3 लोग हैं तो मैं कुछ और लोगों को आमंत्रित करता हूं। आलोक, धीरज, राहुल, प्रियंका, पीयूष, स्टडी आईक्यू की पूरी टीम, शिवम, ठीक है, रोहन त्यागी जी, वासु कटारा, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ मौजूद हैं, मधुसूदन, वरुण जौहरी, साई दत्ता, और जिन लोगों के नाम छूट रहे हैं वो सारे लोग बस स्टडी आईक्यू टीम के नाम पर यहां आ जाएं, क्योंकि ये कान में नाम बताते रहेंगे, एक आध का नाम मुझसे गड़बड़ हो जाएगा। आइए। आज के इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में जिन 2 लोगों का और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस पूरी टीम के अलावा, भुवन और शिल्पी, प्लीज कम ऑन स्टेज। ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि आपका काम मैं कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी रोजगार इसी तरह छीने जाते हैं। आइए। तो स्टडी आईक्यू के बिहाफ पर ये हमारी छोटी सी टीम अभी यहां मौजूद है, और इसके पीछे जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि बहुत बड़ी टीम पीछे बैठी रहती है, सबका मौजूद होना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और हमारी टीम लगातार और बढ़ रही है, क्योंकि जैसा विजन हमने बताया और जो कमिटमेंट हमने बताया कि हम अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमारी पूरी टीम आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अगले साल के फेलिसिटेशन में हमारे लिए ये जगह छोटी पड़े, हम किसी और बड़ी जगह को रेंट आउट करेंगे, क्योंकि अभी लोग कम हैं, उस समय लोग ज्यादा हो जाएंगे तो बैठाने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होगी। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं स्टडी आईक्यू के बिहाफ पर। सबसे पहले अनिल स्वरूप सर, जिनके बारे में बहुत कुछ बातें कही जा चुकी हैं, फिर भी बातें कम हैं। आपके एक्सपर्टीज और आपके गाइडेंस ने हमें एनरिच किया है, हमें रास्ता दिखाया है, और आपके प्रेजेंस ने जो 2022 के एस्पिरेंट्स थे और जो आने वाले समय के एस्पिरेंट्स होंगे, उन सब के करियर को शेप करने में बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत शुक्रिया सर। गेस्ट ऑफ ऑनर्स में नागपाल सर से अगर सीखने की चीज हो तो उनका इतना लंबा करियर रहा है और उसके बाद का एक्सपोजर इतना रहा है जिंदगी का। मैं फीडबैक्स आजकल मॉक इंटरव्यूज की कटवाता हूं तो उसको छोटा करना होता है, मजबूरी है, एडिट करवाना पड़ता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कहां से काटें। सर सारी बातें इंपॉर्टेंट ही बोल रहे होते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो सीखने के लिए सर से बहुत कुछ है। मैं बहुत दिन पैनल में बैठा और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ मुझे सीखने का मौका मिला। तो मॉक इंटरव्यू के पैनल में मैं जब भी सर के साथ बैठा, इन बिटवीन द इंटरवल सर ने काफी कुछ चीजें बताई, सिखाई, समझाई। इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। और आपके प्रेजेंस से, आपके एक्सपर्टीज से छात्रों को जो फायदा हुआ उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैम आप आई और आपने हमें मौका दिया, आप मंच पर आई, ये हमारे लिए बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस ओकेजन को ग्रेस किया आपने। एस प्रकाश सर, जब हम पैनल में बैठते हैं तो हर सर्विस से अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं, और यही आपसे जब सवाल पूछा जाता है पैनल डिजाइन करते हुए इसी बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर हमारे पास एक सर्विस का कोई मौजूद है तो दूसरी सर्विस का भी कोई हो, क्योंकि सबको पता है कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हैं
और उन सारे एक्सपीरियंसेस से, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात हो गई, जब आप जाते हैं और वहां अगर आपके ऑप्शनल का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो आपको पता है गहरे सवाल आएंगे। तो एस प्रकाश सर ने जिस तरह से हमारे पैनल में भूमिका निभाई, आपका बहुत शुक्रिया सर। शशिधरन सर, जिन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं और कई किताबें लिखी हैं, उनके एक्सपीरियंस से हमें बहुत फायदा मिला, आपको बहुत फायदा मिला, बहुत शुक्रिया सर। और सबसे बढ़कर CSE 2022 के परिणाम में जो भी सफल उम्मीदवार हैं, जो यहां बैठे हुए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरह से अपनी बातें रखी उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। मनस्वी ने वही बोलने जा रहे हैं बस। ऐसा होता है कई बार, जो बोलने जा रहे होते हैं वो कहीं कान में आ जाता है, अच्छी बात है ये। मनस्वी ने शायद इशारा किया था इस बारे में। 5 लोगों का ग्रुप था, 2 लोग कामयाब हो गए, 3 लोग नहीं हुए हैं, हो जाएंगे, उम्मीद है। और साथ में उसको बैलेंस इस तरीके से भी उन्होंने किया कि जिंदगी में इस बात का दावा तो कोई नहीं कर सकता कि क्या होगा, नहीं भी होगा तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग नहीं हो पाए, जो हमारे साथ जुड़े या कहीं भी जुड़े या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहूंगा कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा। और अगली बार भी नहीं हुआ तो जिंदगी में जो भी होगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी ऐसी चीज है कि अगर आपने एक बार कर लिया है तो आप इतने सशक्त व्यक्ति तो बन चुके हैं कि जिंदगी में जो भी करेंगे उसमें बुलंदियों को छुएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। जिन लोग का हो गया उनका साथ लीजिए। अनिल स्वरूप सर आगे भी ग्रुप्स बनाते रहेंगे, उनका साथ लीजिए। मुझे उम्मीद है ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स जितने भी बने हैं उसमें जितने लोग कामयाब नहीं हुए हैं वो आने वाले समय में जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से और सरों को, आप सबको थैंक्स अ लॉट। आपने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। भुवन, आपको आने की जरूरत है? मैं बोल दूं लंच वाली बात फॉर्मली। चलिए मैं ही बोल देता हूं कि बाहर लंच शुरू है। दही तो मैंने देखा है, सलाद भी देखा है, तो शुरू करते हैं, अच्छा सा लंच करते हैं। एक बार बस एक रिक्वेस्ट है कि सारे पैनल मेंबर्स को और अनिल स्वरूप सर को भी बुलाकर हमारे साथ भी फोटो हो जाए। सिर्फ टॉपर्स के साथ फोटो होना ठीक बात नहीं है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे टीम के महत्वपूर्ण सदस्य वरुण जौहरी जी अभी एक फीडबैक सेशन करेंगे। तो आप लोग जो लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ एक फीडबैक सेशन होगा। उसके लिए वहां एक कोना बना हुआ है जहां पर हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। इस तस्वीर के साथ जाते जाते कुछ और लोगों को धन्यवाद। सबसे पहले कैमरा की टीम को, जो लगातार सुबह से मेरे ख्याल से 7 बजे आ गई थी। कैमरा टीम के सभी सदस्यों को बहुत आभार। आने वाले समय में वीडियो आएगा, उसके लिए मैं एडवांस में एडिट और ग्राफिक्स की टीम को पहले ही धन्यवाद कर देता हूं। और हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारी मेंटोर्स की टीम और हमारे ट्रेनर्स जो हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, उन सभी का बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार सर, एक लास्ट में जाते जाते लंच के ठीक पहले एक बार हम लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएंगे सारे लोग।
So can we just settle around for a couple of moments, please? Please, sir. Can we be joined by Nagpal, sir? Ma'am, please. Ma'am, please. Can I invite onto the stage the parents of Pranjal Jain, please, and also request Pranjal Jain himself to please come onto the stage. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the parents, the proud parents of Pranjal Jain. Welcome, ma'am. Welcome, sir. A huge round of applause for Pranjal Jain and the parents, the proud parents of Pranjal Jain, who have kindly agreed to join us here this afternoon. Right, sir. May I now request Ms. Pooja Jain, please speak about the experiences that you have experienced of late. Ms. Pooja Jain. Hi everyone, sorry to be in between your lunch and keep you holding from the delicious food I just checked on my way, and that was my first stop. Anyways, I am sister of Pranjal, very happy to be here. I have met some of you and I can just say that this has been obviously very hard process. I work as a product manager at Google. Corporate life is so different from government service, and I have such immense respect for people who have put in the perseverance and are here today. But people who are still continuing to persevere, please do so. Every life is challenging. My corporate life is not any less easier than your government life. And obviously there are merits in being a government service officer. I am very proud of Pranjal. My mom is very proud of Pranjal. I am proud of all of you as well. Just being here with all of you just makes me feel like our future of India is in good hands, because you're all the future of India. And I personally have huge hopes from this audience right here. Please, please, please work for the next upcoming generation. Make sure that all of us are having a sustainable future. There was a lot of traffic when I was coming. Please work for traffic. Thank you so much. Thank you, sir. Don't have expected StudyIQ, and we all don't have expected that Google will send its representative all the way from California. Thank you, Ms. Jain, for sharing your insights. On that note, it's a wrap from me and Shilpi. Thank you for joining us here this afternoon, and all the best as you go ahead to serve our country. Thank you. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।